द्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। વાહ ફરે વાહ દર ફરે, ફરે નદી ના બોલ, પણ સુરા બોલ્યા ના ફરે ભલે પશ્ચિમ ઉગે સૂર. નમસ્તે. આજની પ્રાર્થના સભામાં હું પરિતોષ સુરેલિયા ટીજીએસ પરિવાર વતી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે 15 એપ્રિલ ગુરુવાર અને ગુજરાતી તિથિ પ્રમાણે આજે ચૈત્ર સુદ ત્રીજ છે. સભાની શરૂઆત કરીએ પ્રાર્થનાથી. नमस्कार। माटी कहे कुम्हार को तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसो आएगो मैं रो दूंगी तोय। प्रस्तुत कबीर साहब रचित इस सुंदर भजन से हमें यह सीख मिलती है, जीवन क्षणभंगुर है, हमारा यह शरीर नाशवंत है। एक दिन हंस को, यहाँ तात्पर्य है जीव को, अकेले ही उड़ जाना है। किसी भी बात का अभिमान किए बिना, किसी भी बात का अभिमान किए बिना अच्छे और सच्चे कर्म करके जीवन सफल बनाना है। अपने नेक कार्यों से ही हमें अपना जीवन संवारना है। जब तुम आयो जगत में जग हंसे तुम रोय, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोय। एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला। ओ एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला। अरे गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा। अरे चेला की करनी चेला रे साधो भाई उड़ जा हंस अकेला। ओ एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला। अरे माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ओ माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रे न बसेरा रे साधो भाई उड़ जा हंस अकेला। ओ एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला। अरे मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये वीरा। ओ मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये वीरा। अरे भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई कहे ये भुजा हमारी। अरे नारी कहे नर मेरा रे साधो भाई उड़ जा हंस अकेला।
મિત્રો, આજની પ્રાર્થના સભામાં 15મી સદીથી લઈને અત્યાર સુધીના આવા જ કેટલાક યોદ્ધાઓને યાદ કરવાનો ઉપક્રમ સેવ્યો છે. તો સૌપ્રથમ આપણે 15મી થી 18મી સદીના એ મહાન યોદ્ધાઓ કે જેમણે પોતાની જન્મભૂમિની રક્ષા કાજે પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી દીધી, એમને ચરણોમાં શ્રદ્ધાસુમન અર્પીએ. આ માટે હું આમંત્રિત કરીશ યુવરાજ ડોડિયા, ઋષિ ઉપરાંત પ્રથમ દુતાગરા અને વિષ્ણુ વિલરિયા. નમસ્તે, હું યુવરાજ ડોડિયા ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરું છું. ભારતના ઇતિહાસમાં ઘણા મહાન શાસકોએ જન્મ લીધા છે. ભારત ઉપર અનેક સદીઓમાં એક કરતા વધારે રાજાઓએ શાસન કર્યો છે. તેથી જ તેને મહાન શાસકોનો દેશ કહેવામાં આવે છે. વિશ્વવિખ્યાત ચક્રવર્તી સમ્રાટ અશોક શક્તિશાળી ભારતીય મૌર્ય વંશના એક મહાન સમ્રાટ હતા. તેમની રાજધાની પાટલીપુત્ર હતી. તેમનું પૂરું નામ દેવનાપ્રિય અશોક મૌર્ય હતું. તેમનું વિશાળ સામ્રાજ્ય એ સમયનું સૌથી મોટું ભારતીય સામ્રાજ્ય રહ્યું છે. ચક્રવર્તી સમ્રાટ અશોક વિશ્વના તમામ મહાન અને શક્તિશાળી રાજાઓની હરોળમાં હંમેશા ટોચ પર રહ્યા છે. સમ્રાટ અશોક પ્રેમ, સહનશીલતા, સત્ય અને અહિંસક જીવન પ્રણાલીના સાચા સમર્થક હતા. તેથી જ તેમનું નામ ઇતિહાસમાં મહાન પરોપકારી સમ્રાટ તરીકે નોંધાયું છે. આભાર. હું કૃષિ ભટ્ટ ધોરણ 5 માં અભ્યાસ કરું છું. આજે હું આપને ભારતના ઇતિહાસમાં અમર એવા શિવાજી મહારાજ વિશે થોડું જણાવીશ. શિવાજી રાજા ભોસલે ભારતના મહાન યોદ્ધા હતા. તે મરાઠા શાસનના ખૂબ જ લોકપ્રિય અને સફળ શાસક બન્યા. નાનપણથી જ તેમના દેશભક્તિની અનંત ભાવના હતી. શિવાજીએ તેમના શિસ્તબદ્ધ સૈન્ય અને સુવ્યવસ્થિત વહીવટી કામોની મદદથી લાયક અને પ્રગતિશીલ વહીવટ પૂરો પાડ્યો. ભારતના સ્વતંત્ર સંગ્રામમાં શિવાજીની જીવનશૈલીથી પ્રેરણા લીધા પછી ઘણા લોકોએ ભારતની સ્વતંત્રતા માટે પોતાનો શરીર, મન અને ધનનો ત્યાગ કર્યો હતો. ધન્યવાદ. નમસ્તે, હું ધોરણ 6 નો વિદ્યાર્થી પ્રથમ દુતાગરા. હું આજે તમને મહારાણા પ્રતાપ વિશે થોડું જણાવીશ. મહારાણા પ્રતાપસિંહ ઉદયપુર મેવાડમાં સિસોદિયા વંશના રાજા હતા. મુગલ કાળમાં જ્યારે રાજપૂતાના અન્ય શાસકોએ મુગલો સાથે સંધિ કરી, ત્યારબાદ મેવાડની ભૂમિ પર મહારાણા પ્રતાપ નામનો સૂર્ય નીકળ્યો. તેમણે મુગલ બાદશાહ અકબર સાથે ઘણા વર્ષો સુધી યુદ્ધ કર્યો અને ઘણીવાર તેમણે યુદ્ધમાં મુગલોને પણ પરાજિત કર્યા. તેમણે પોતાના આખો જીવન રાષ્ટ્રકુળ અને ધર્મની રક્ષા માટે સમર્પિત કર્યો. તેથી જ ઇતિહાસમાં તેનું નામ બહાદુરી અને દૃઢ વચન માટે હજી અમર છે. આભાર. નમસ્તે, હું વિષ્ણુ વેકરિયા ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરું છું. આજે હું તમને ભારતના ઇતિહાસની 2 મહાન નારી પાત્રો વિશે જણાવીશ. રાણીનું નામ આવે એટલે ચાતુરી, પરાક્રમી અને બલિદાનોની ત્રિવર્તી સંગમ ધરાવતી વીજળીના લીસોટા જેવી તેજસ્વી ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ સાથે પહેલા યાદ આવે. આજે પણ કોઈ સ્ત્રી બહાદુરીનું કામ કરે તો લોકો તરત જ તેને ઝાંસીની રાણીનો ખિતાબ આપીને તેને સન્માન કરે છે. એટલે જ તો કહેવાય છે, બાદશાહી તો મુગલની, વેપાર તો વણિકનો, ખેડ તો કણમીની, ભેખ તો વરદારીનો અને રાણી તો ઝાંસીની. તારાબાઈ ભોસલે ભારતના મરાઠા સામ્રાજ્યના શાસક હતા. તે છત્રપતિ રાજા રામ ભોસલેના રાણી હતા.
મરાઠા પ્રદેશના સ્થાપક શિવાજી મહારાજના પુત્રવધુ હતા. પતિના મૃત્યુ બાદ મરાઠા પ્રદેશને બચાવી પડવા મુગલોની સામે લડાઈ જીવિત રાખવામાં તેમની મહત્વની ભૂમિકા હતી. પુત્રની સરગીર વય દરમિયાન તેમને રાજ્યના શાસક રૂપે જવાબદારી સંભાળી હતી. આભાર. मेरा नाम है पीयूष और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ. फेमस प्लेबैक सिंगर सुखविंदर सिंह अपने एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि उनके घर में भगवान की तस्वीरों के साथ शहीदों के भी तस्वीरें रखी जाती हैं. वे कहते हैं कि आज़ादी हमारे देश में बहुत महंगे रूप से हासिल हुई है और जो चीज़ इतनी कुर्बानियां देकर हासिल की जाए उनके मायने बढ़ जाते हैं. शहीद दीवाने थे, आशिक थे, उन्हें भी इश्क था, लेकिन देश के साथ, देश की आज़ादी के साथ. तो चलिए हम भी गुजरते हैं आज़ादी की उन गलियों में और महसूस करते हैं उन सभी बलिदानों को जिन्हें हमारे देशभक्त ने मौत को अपनी दुल्हन मानकर खुशी खुशी गले से लगा लिया. इस पूरी आज़ादी की यात्रा कड़ी को जोड़ने आ रहे हैं हैदर अली, करणवीर सिंह, नीव, काव्या और हमारे अभिभावक जन. तो चलिए शुरू करते हैं. अपनी हिम्मत और हौसले की दम पर मंगल पांडे की शहादत ने भारत में पहली क्रांति के बीज बोए थे. भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई मतलब 1857 की संग्राम की शुरुआत उन्हीं के विद्रोह से हुई थी. जब बंदूकों में राइफल का इस्तेमाल शुरू हुआ तो बंदूक में कारतूस को डालने से पहले कारतूस को मुंह से खोल के डालना पड़ता था. सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि कारतूसों को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था. ये हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए गंभीर धार्मिक विषय बन चुका था. इसका मंगल पांडे ने विरोध किया तो अंग्रेजों ने उनकी वर्दी और हथियार छीनने का आदेश दिया, जिसे मंगल पांडे ने मानने से मना कर दिया. मारो फिरंगी को नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे की जुबान से निकला था. 8 अप्रैल 1857 का दिन मंगल पांडे की फांसी के लिए निश्चित किया गया था. तब जल्लादों ने मंगल पांडे के खून से अपने हाथ रंगने से इनकार कर दिया था. बाद में भारत के इस वीर पुत्र ने आजादी के यज्ञ में अपनी प्राणों की आहुति दे दी. गांधी युग 1915 में गांधी जी का साउथ अफ्रीका से भारत आना हुआ. गांधी युग के प्रमुख आंदोलन जिन्होंने देश की तस्वीर बदल दी वो है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन. महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद स्थित है से दांडी गांव तक अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरुद्ध पैदल मार्च निकाला था. अभी चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमक को भारत में श्रम और मेहनत का प्रतीक बताया है. काकुरी में हुई ट्रेन लूट को काकुरी कांड के नाम से जाना जाता है, जिसका मकसद हथियार खरीदना और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करना था. 19 दिसंबर 1927 इतिहास की वह तारीख है जब देश के महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई. इन क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा इसीलिए चुना कि देश के आवाम आजाद हवा में सांस ले सके. राम प्रसाद बिस्मिल ने चलते हुए कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे. आजादी दिलाने के इस कड़ी में जिस आखिरी देशभक्त का नाम आता है वो थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने एक लॉकर फौज का निर्माण किया था, जिसका मकसद दूसरे मित्र देशों से मदद लेकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना था. नेताजी ने उस सेना का नाम रखा था आजाद हिंद फौज. युवाओं को जोड़ने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. साल 1945
विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए जहां लेबर पार्टी ने जीत हासिल की। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति हुई और कई विरोधों के बाद माउंटबेटन को 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद देश मुकर्रर करना पड़ा। शहीदों शूरवीरों की शहादत याद आती है। गजब क्या लोग थे, गजब क्या लोग थे, उनकी बादशाहत याद आती है। लुटा दी जान तक अपनी, लुटा दी जान तक अपनी देश की खातिर, उन दीवानों की वतन से मोहब्बत याद आती है। भगत सिंह ने कहा है, जिंदगी तो अपना दम पर जी जाता है, दूसरे के कंधे पर तो सिर्फ जनाजा उठाया जाता है। चंद्रशेखर आजाद के शब्द है, मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश अधिकारियों को खरा जवाब देते हुए अशफाक उल्लाह खान ने ये कहा, बहुत ही जल्द टूटेंगी ये गुलामी की जंजीरें, देखना एक दिन आजाद ये हिंदुस्तान होगा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Friends, in this segment, we shall take you to the most inspiring lives and careers of our brave soldiers and officers of independent India. Let's remember the greatest of all military commanders of India, Field Marshal Sam Bahadur Manek Shaw. He was the first Indian to get the rank of Field Marshal. He served in the army for 4 decades and 5 wars. He played a major role in the Indo-Par to lead the creation of an independent country, Bangladesh. Now let's see what made him one of the most charismatic leaders. First, he was shot with the bullets and rushed to a hospital. The doctor asked, "What happened?" And he said, "I got kicked by a donkey." Which the doctor said, "You have a good sense of humor. I think you are worth saving." Second, he once sent a parcel of bangles to the commanding officer of a battalion in Mizoram, who was avoiding conflict with a note. Later, when the commander gave news of victory, he wrote, "Send the bangles back." Third, on addressing a fresh bunch of recruits in Dehradun, he said, "Gentlemen, you will never become crorepati's in your life. Never drive fancy cars. Never live in luxurious houses. But you shall command the highest honor in India, which is the respect which everyone cannot get." He remains India's tallest military leader of all times. Very soon, Vicky Kaushal shall be playing the role of Sam Manek Shaw for his biopic. I am Pujan Jansari from grade 6R. Another soldier worth highlighting is Subedar Yogendra Singh Yadav. He took 9 bullets on his body and claimed the peak of the Tiger Hills. And the famous movie named Lakshya was made on him. He was honored by the Paramveer Chakra. You might be wondering, what is the Paramveer Chakra? The India's government honors our great warriors by the 6 gallantry awards: Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, Veer Chakra, Ashok Chakra, Shaurya Chakra, and Kirti Chakra. Now, let us take a pledge to keep the legacy alive of our great warriors. This is the story of Flight Captain Vikram Batra. When he was spending time with his family during his holidays, he got a call for his duty. He told his friends and parents, "मैं लौटूंगा जरूर, या तिरंगा लहरा के आऊंगा, या तिरंगे में लिपट के आऊंगा." After defeating the enemies on one mountain peak, he gave a slogan, "ये दिल मांगे मोह," meaning, "I will not rest until I throw away the enemies from our territory." While fighting one of the steepest mountain peaks, he lost his life. He was awarded with the Paramveer Chakra. A movie based on his life titled Shershah will be released shortly. A documentary made in his memory shares thoughts for India. My countrymen, if you want me back, be a citizen worth fighting for. Now the question arises, what kind of citizen should we become? This is what few of our students and parents have thought. Please join them in citizenship pledge. Let's pledge to become the citizen of the highest value. Let's treat others in the way we wish to be treated. Thank you. Let's pledge to be physically fit first, as a healthy mind resides in a healthy body.
Let's pledge to stop playing video games and devote our time to strengthening our body, which can serve the nation in our capacity. Let's pledge to be disciplined in life. Discipline means respecting rules, time, people, public and private property. Namaste. Let us we all take oath today to preserve and promote our Indian traditions and culture, like to learn Bharat ka prachin rajयोग, like meditation. For that, you will have to switch on your Peace of Mind channel at least once in a day. Secondly, to learn Bharat ka various asanas or yoga, like our PM is also promoting it. So I think every child should learn and know what are various yogas or asanas. Thirdly, we should know the real history of our India. For that, you may watch historic Hindi channel on YouTube to get real good information about history of our India. Fourthly, one should spend some time in learning and knowing classical Indian dance and music. And last but not the least, we should start the tradition of gifting small pots of herbal medicinal plants like tulsi, green leaf plants, instead of gifting flower bouquet wherever it is possible. So like that, we should follow our Indian tradition culture for sure. Thank you. मित्रों, मैं महेश राठौड़ फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एनवायरनमेंट के बारे में बात करने के लिए। हमारी 3 चीज़ें ज़रूरत है: हवा, पानी और खुराक। हवा पानी सब हम लोग को मिल जाता है। हम लोग को ख्याल रखना है कि पानी का कम से कम दुरुपयोग करें और फूड का। हम लोग जानते हैं कि 10 साल के बाद क्या होने वाला है, इसलिए सोचिए कम से कम पानी का व्यय मत कीजिए और फूड लिमिटेड यूज़ कीजिए। नमस्कार। When someone asked me to describe India, I would just quote a few lines of this song. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. This is one of the India's most loved song. Now it's time to rise for another song which we call as our national anthem, which unites us all. Assembly सावधान. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Assembly Vishram. We just recalled the roles of the great warriors of India in nation building. Now let's hear some thoughts about nation building from the teachers. I welcome all the teachers from my unit to present the point to socho of the day. यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा. Namaste. Today we talk about nation building. It is said India is the only civilization to have withstood the test of time. And how many years? 250,000 years. The question should be asked, what is the force that helped India withstand several countless invasions? It is the power of our scriptures, the power of the legacy given to us by Ram and Krishna. It is this Chaitra Navratri, we just started a new year from Gudi Padwa yesterday. Let us remember Lord Ram and what he
what was the concept and position of Guru for him. He is sent to the Gurukul, and it is said, Guru greh gaye padhan raghurai, alpakal vidya sabai. Even the Lord himself had to go to the Guru. Second instance, when he had to pick up the bow, he is not arrogant. He bows down to the Guru mentally. Guru hi pranam manahi manakina, ati laghav uthai danulina. This is the protocol that even Lord follows himself. And the third instance, where he defeats the entire army of Ravan, he says, Guru Vashishta kula pujya hamare, inki kripa danujaran mare. He doesn't say, I have done it. He says, because of the Guru's grace and his blessings, we could defeat the entire army. And he says, not just my own Guru, he says, Guru Vashishta kula pujya hamare. He is the Kul Guru. We have a concept of family doctors. Point to think is, can we have a concept of family Guru and a Kul Guru? On this Chaitra Navratri, let us salute our first nation builder, Lord Ram, and their Gurus, Vashisht and Vishwamitra. Thank you. Namaste. When we talk about relationship between a teacher and a student, the first example that comes to our mind is that of Acharya Chanakya and his disciple Chandragupta Maurya. It is because of Acharya Chanakya that Chandragupta became emperor of entire Indian subcontinent. But Acharya Chanakya always ensured that his disciple doesn't become egoistic. He explained everything and every person, whether good, bad or ugly, has some positive qualities. He explained water served in a pot made up of clay will have better taste than water served in a pot made up of gold. In the same way, when a teacher advises the student should take it positively. Teachers do not have any selfish motive. Thank you. Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Anne Sullivan used this weapon to open up the world of a deaf and a blind girl's life. Sullivan's dedication and innovative teaching had made it possible for Keller to break through the formidable barriers that challenged people with multiple disabilities. A teacher's insight and perseverance contributed to breaking down of myths and stereotypes, furthering social and economic justice. Both Helen Keller and Anne Sullivan became role models for thousands of people around the world. गुरु वो है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में उसके मार्गदर्शक का काम करता है और उसके द्वारा दी हुई नॉलेज सिर्फ बच्चों तक ही लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि वो एक समाज के निर्माण में भी सहायता देती है। कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ वहाँ पर एक महिला की सफलता का पूरा श्रेय पुरुष को जाता है और वो है 19वीं सदी के महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले, जिन्होंने मार्गदर्शक बनकर सावित्रीबाई फुले को इस समाज की बेड़ियों से आजाद होने के लिए, उनको तोड़ने के लिए सहायता की। वो न सिर्फ सावित्रीबाई फुले के गुरु थे बल्कि उनके जीवन साथी भी थे। ज्योतिराव फुले ने शादी के बाद उनको पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो स्वयं समाज में चली आ रही दकियानुसी सोच के खिलाफ आवाज उठा सके। सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं, उन्होंने अपने कार्यों से समाज में क्रांति ला दी। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी बुराइयों और महिलाओं के अधिकारों और उनकी गरिमा के लिए ठोस कदम उठाया। पहला स्वदेशी स्कूल सावित्रीबाई फुले द्वारा पुणे में खोला गया। सचमुच जहां आज भी हम जेंडर इक्वालिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं अंग्रेजों के जमाने में सावित्रीबाई फुले जैसी महिला ने नारी शिक्षा और उनके अधिकार के लिए जोर दिया। ऐसी महान महिला और उनकी सोच को दिशा देने वाले उनके गुरु को शत शत नमन। બધા શિક્ષકોને સાંભળીને તમને બધાને એવું લાગ્યું હશે કે ગાડી પાટા પરથી ઉતરી ગઈ, કારણ કે
એસેમ્બલીની શરૂઆતમાં પરિતોષે તો કંઈક એવું કહ્યું હતું કે 15મી સદીથી લઈને અત્યાર સુધીના બધા જ યોદ્ધાઓ એટલે કે લડવૈયાઓને આ એસેમ્બલી સમર્પિત છે. જ્યારે શિક્ષકો તો એક જુદી જ વાત કરી રહ્યા છે. એ તો વાત કરી રહ્યા છે ગુરુઓની. તો હું તમને જણાવી દઉં, ગાડી પાટા પર બરાબર જ છે. એક રીતે જોઈએ તો શિક્ષક એ પણ એક લડવૈયો છે, એક યોદ્ધો છે. એણે પોતાના વિદ્યાર્થીમાં રહેલી પ્રતિભાને બહાર લાવવા માટે ક્યાંય ને ક્યાંય યુદ્ધ કરતા રહેવું પડે છે, ઝઝૂમતા રહેવું પડે છે. અને એટલે જ શિક્ષક એક યોદ્ધો છે. શિક્ષકે ક્યારેક સમાજ સાથે, ક્યારેક પરિસ્થિતિ સાથે, ક્યારેક પરિવાર સાથે અને ક્યારેક તો પોતાની જાત સાથે પણ સતત ઝઝૂમવું પડે છે. આપણે જોયું કે ચાણક્ય અને જ્યોતિરાવ જેવા ગુરુઓ કે જેમણે સમાજ સાથે લડવું પડ્યું હતું, તો સાલેવન જેવા ગુરુએ એમણે તો શિક્ષણની પરંપરા, શિક્ષણની રૂઢિ સાથે ઝઝૂમવું પડ્યું હતું. અને તેથી જ કહું છું કે શિક્ષક એ પણ એક યોદ્ધો જ છે, એક લડવૈયો છે. યોદ્ધો હોય ને એને તો માત્ર યુદ્ધ સમય પૂરતું જ લડવું પડે છે, પણ એક શિક્ષક એને તો આ જીવન લડત આપતી રહેવી પડે છે. અને તે એક નિર્વિવાદ હકીકત છે કે નહીં? જરા વિચારો. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव के तूने गोविंद दियो बताए. जय गुरुदेव जय गुरुदेव.